Hello students, this is my third lecture of physics for class 12th student. Student, this is your second question. In this question, two equal positive charge, each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as in figure. Calculate the magnitude and direction of the force on the 3 microcoulomb. In this question, there is two charges. This is 2 microcoulomb and 2 microcoulomb, and here is 3 microcoulomb. We have to find the total electrostatic force on the point P, that is 3 microcoulomb due to 2 microcoulomb and 2 microcoulomb. मीन्स में P पॉइंट पे 3 माइक्रोकुलाम पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है. तो हमने पढ़ा कुलाम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. R is the distance between two charges and force is a vector quantity. First, we find the electrostatic force on point P due to point A. Electrostatic force always acts along the line joining the two charges. So we have to join an imaginary line like this, and both are positive charges, 2 microcoulomb positive and 3 microcoulomb positive. So positive charge repel to each other, then the direction of force will be outward, and this force is named as F1, or we can say the force applied on P due to A. Now the force applied on the force applied on P due to B will be outward side, because 2 microcoulomb is positive charge and 3 microcoulomb is positive charge. First of all, we have to join an imaginary line, because the electrostatic force always acts towards the line joining the charge. So we join the an imaginary line, एंड इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका आउटवर्ड साइड इधर होगा, एंड दिस इज नोन एज F2. तो जो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज थीटा एंगल, एंड इसे हम यहाँ पे अगर लेके जाएं तो ये वर्टिकली ये अगर थीटा, देन दिस इज ऑल्सो थीटा एंड द डायमेंशन इज सेम, सो दिस विल ऑल्सो थीटा एंड दिस बिकम थीटा एंगल. Now students, we have to find the net force at point P. Net force. In previous class 11th, you have discussed that if a point P there is applying two forces F2 and F1 at an different angle or same angle, theta and theta, then the total force we have to resolve here, and after resolving we get F2 sine theta and F2 cos theta, and here F1 sine theta and F1 cos theta. The direction of F2 sine theta and F1 sine theta is opposite to each other, so it will cancel out, and the total resultant force will equal to F2 cos theta plus F1 cos theta. So first of all, we have to find the F2 and F1, then we can add both F2 cos theta and F1 cos theta. Now we know that according to Coulomb's law, F is equal to K into Q1 Q2 upon R square, where K is Coulomb's constant, the value of K. In previous lecture I have discussed that's 9 into 10 to the power 9, and here because the dimension of A to C and B to C both are equal, and here is also equal, so F2 will equal to F1, that is equal to K Q1 Q2 upon R square. This will equal to K means 9 into 10 to the power 9, Q1
2 into 10 to the power minus 6, because microcoulomb means 10 to the power minus 6. So we can write here 2 into 10 to the power minus 6 into Q2 is 2 into 10 to the power, sorry, F1, Q1 and Q2. Q2 is 3 microcoulomb. Then 3 into 10 to the power minus 6 upon the distance between two charges. The distance between two charges A and P will equal to, from Pythagoras theorem we know that there is a triangle of dimension 3 and 4, then its hypotenuse will equal to root over 3 का square plus root over 4 का square. This is equal to 25 will equal to 5, means this dimension is 5 meter. Then students, 5 meter we can write here 5 and r square. So r square, after solving we get F1 is equal to F2 is equal to 2.16 into 10 to the power minus 3 Newton, and the net force will equal to 2F cos theta, because F1 cos theta and F2 cos theta both are same dimension, same direction. So it will be added F2 cos theta plus F1 cos theta. F2 is equal to F2. So we can write here 2F cos theta. Now 2 into F is 2.16 into 10 to the power minus 3 into cos theta. Cos theta will equal to base upon hypotenuse. Base is 4 upon hypotenuse is 5. So F net will be total force on the P point will equal to 3.5 into 10 to the power minus 3 Newton. This is very important numerical students. Students, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. इट इज डिनोटेड बाई अपसाइलेंट. एक सिंबल है अपसाइलेंट जो कुछ इस तरीके का होता है. And it is the property of a medium which tell us about the strength of electrostatic force or electrostatic field. Means इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड और फोर्स की वैल्यू किस मीडियम में ज़्यादा होगी, किस मीडियम में स्ट्रांगर होगी या वीक होगी, ये हमें कौन बताता है? ये हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताता है. ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है. जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 upon R square. If two charges is placed at a distance R, then the electrostatic force F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is the Coulomb's constant and the value of Coulomb's constant is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the electrical permittivity in air. तो ये क्या होता है? Students, electrical permittivity, it is a property of a medium which tell us about the strength of electrostatic force. If two charges is kept in air, then electrostatic force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. When two charges kept in air, but same condition when two charges kept in other medium. सपोज बच्चों हमारे पास दो चार्ज है, दोनों को हमने पहले एयर में रखा, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू हुई वो हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अगर इन दोनों चार्ज को उठा के हमने किसी और मीडियम में रख दिया, वाटर में रख दिया, मिल्क में रख दिया, चाय में रख दिया, किसी और मीडियम में अगर रख दिया, उस कंडीशन में जो हमारा फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह हम यहाँ पे एप्सिलॉन m लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर.
ये बच्चों एप्सिलॉन m जो होता है ये उस मीडियम की पार्टिकुलर उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी जो हमें ये बताएगी कि उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम। एक अदर थिंग, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव permittivity, it is also denoted by capital K. So students, relative permittivity is a ratio of permittivity in medium and permittivity in space. It is denoted by K or an other symbol epsilon r. This is equal to epsilon medium upon epsilon naught. For any medium, electrostatics force we can write F is equal to 1 upon 4 pi epsilon m q1 q2 upon r square. Students, epsilon m is equal to, we can write k into epsilon naught. So electrostatic force in a medium F is equal to 1 upon 4 pi epsilon m is equal to k into epsilon naught q1 q2 upon r square. This k is the relative permittivity and we can write here 1 upon 4 pi epsilon naught into k q1 q2 upon r square. Students, this 1 upon 4 pi epsilon naught is known as the Coulomb's constant and this k is relative. This k is relative permittivity. For any medium, electrostatic force is 1 upon 4 pi epsilon m into q1 q2 upon r square. For air, 1 upon 4 pi into epsilon naught. And relative permittivity, in terms of relative permittivity, we can write F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into k q1 q2 upon r square, where k is the relative permittivity and F is the electrostatic force. Then the value of k is very simple. It depends on the medium. Students, our next topic is electric field. Field means space. जैसे क्रिकेट का फील्ड होता है वैसे field means space. It is a space around a charge where electrostatic force is experienced, or we can say an electrical field is the region of space surrounding electrical charge where a force is exerted on the other electrical charge body. The direction of electrical field, the most important topic, the direction of electrical field is always taken as the electrostatic force. Okay, and the electric field readily invert towards a negative charge. Means if a positive charge, then the electrical field always outside. Direction of electrical field always outside. If a negative charge, then the electric field is always inward. Students, the next point, concept of electric field was introduced first of all by Faraday. सबसे पहले से फैराडे एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया. एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाद हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड is the space. It is a space around a charge where electrostatic force is experienced. This electrostatic force may be stronger or weaker at different positions. So we study about an electrical field intensity which gives the strength. The electrical field intensity at any point is the strength of electrical field at that point. It is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. Means आप simple ऐसे बोल सकते हो, electrical field intensity, it is a force per unit charge. E is equal, it is a vector quantity, so it represent
capital E vector, and according to Coulomb's law, we know that suppose here is a point O and here is point P. A capital Q charge is placed at point O and Q naught charge is placed at point P. Then the force, because both are positive charge, then the force between two charges will be towards outside, and this is F vector. Then by definition, this force F by Coulomb's law, we know that F vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q into Q naught upon R square. By definition of electrical field intensity, E vector is equal to force per unit charge. बच्चों हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस. सपोज ये हमारे पास क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो पाया जाए, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करने के लिए एक टर्म पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज. सपोज इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स आउटसाइड कर रहा है, तो इसके बीच में इस पे कितना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस क्यू चार्ज की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होगा. एंड यहाँ पे अगर हम E की वैल्यू पुट करें तो F की वैल्यू पुट करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन में Q naught into R square. This Q naught will be cancelled out, and the electrical field E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Intensity of electrical field E vector is equal to, this is very important formula students, and SI unit of electrical field E is equal to Newton per Coulomb, because the unit of force is Newton and charge, unit of Coulomb is charge. Sorry, the unit of charge is Coulomb. Here Newton per Coulomb. Students, now we study about the important points about electrical field. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q. दस इट इज अ स्फेरिकल. सपोज अगर हमारे पास एक Q चार्ज है, तो इसके चारों तरफ हमने बताया कि इसके चारों तरफ जो भी स्पेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड. तो अगर हमारे पास ये डिस्टेंस R है और सेम डिस्टेंस R पे जो हम एक फील्ड का, एक लोकस का एक इमेजिनरी स्पेस क्रिएट करेंगे, ये एवरी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, सेम होगा. इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि एक स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वी डिस्टेंसल होता है, R डिस्टेंस पे सेम होगा. एंड द अदर प्रॉपर्टी वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. सपोज हमारे पास एक Q चार्ज है, तो इससे हम जितनी दूरी पे जाएंगे R की वैल्यू जितनी बढ़ती हुई जाएगी उतने ही हमारा E की वैल्यू कम होता जाएगा. मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस वेयर चार्ज इज प्लेस्ड. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.